Hello friends, welcome to our new video. Let's try to solve the today's problem. Okay, so before that, if you guys are new to our channel or if you did not subscribe our channel yet, then please go and subscribe our channel and hit the bell icon as well so that you can get the notifications of our new videos. Okay, so the today's problem is Newton loves different cities. Okay, so let's solve this problem. Okay, so here we have given some problem statement. The problem statement is there are n distinct cities C1, C2 up to Cn on on a number line, and Newton is currently in city X. Okay, so now he wants to travel to all other cities. So he wants to choose integer s that he can visit all the cities starting from city X using two operations. Okay, so the first operation is subtract s from the current city number and go to the resultant city. Okay, and then add s to the current city number and go to the resultant city. Okay, so we have to find the maximum s such that Newton can visit all the n cities. Okay, so here in input we have in first line we have given two integers, that is n and x. Okay, so and the next line contains n different integers, that is c0 c1 up to cn. Okay, and we have to find maximum s. Okay, so we have to find maximum s such that Newton can visit all the n cities. Okay, so here we have given some sample input and their output. Okay, you can see here as well. This is the second sample input and this is output for this sample input. Okay, so let's try to understand the approaches to solve this problem. Okay, so now we are going to discuss the two approaches to solve this problem. Okay, so let's see and let's okay, so here what we can do. Okay, let's discuss the first approach. Okay, so in the first approach what we can do, first we'll take the input from the user input, that is two numbers n and x. We'll take these two numbers as an input from the user. Okay, after that what we can do, after taking the input, we have to, okay, in first approach we are going to use the uh, GCD concept, that is greatest common divisor. Okay, so first we can calculate the GCD of the two numbers, greatest common divisor between the two numbers, and then we can find the maximum s. Okay, so here we'll calculate the GCD of two numbers. Okay, that is, let's suppose a and b. We'll calculate the GCD, and after calculating the GCD what we can do, uh, we'll initialize one variable to -1. Okay, and after that what we can do, uh, we'll write the condition, or we'll write the for loop. Okay, to traverse the all given and that is c1 c2
all given cities. Okay, so we'll write the for loop for this, and inside this for loop, what we can do, we'll take all the c0, c1, c2, that uh, that is array input. Okay, and after that we'll write one condition. Let's suppose we'll write if condition, and we'll inside this we'll write if g equals to -1. If g is -1, then simply what we can do, we'll use the one of the math class function, that is absolute function, to return the integer value, only integer value. Okay, so we'll write math dot abs function. Okay, and inside this what we can do, uh, we'll simply minus this, let's suppose we'll store this array element in variable y. Okay, and here we'll in abs function we'll minus this array element y minus x, will minus x from the elements which was given in array. Okay, and if this condition is not true, then in else part what we can do, we'll calculate, or we'll call the gcd function. Okay, for that what we can do, we'll call that gcd function. Okay, and inside this we'll calculate the gcd, like we'll write g, and here as well we'll write math.absolute function. Okay, and inside this as well we'll minus the x from array elements. Okay, and here we'll assign y equals to x. Okay, and simply we'll print g. Okay, so this is the first approach, okay, to solve this problem. Okay, uh, okay, so instead there is another way as well. Using the gcd you can what we can say, you can write the code for this problem. Okay, so here we'll see this as well. Okay, instead of this you can write like, we'll take input. Okay, that is n and x number. Okay, after that what we can do, we'll take one array. Okay, we'll take one array, and we'll write the for loop to take this array elements as an input. Okay, and inside this for loop what we can do, we'll directly minus the x from this array elements. Okay, so we'll minus this array elements. Okay, x from these array elements. Okay, and after that what we can do, let's suppose we'll declare any variable, and we'll initially assign it with 0. Okay, after that we'll write one for loop. Okay, and inside this for loop, uh, okay, so we have here we have minus x is minus, we subtract from the array elements. Okay, so um, we have to create one gcd function as well. So we'll create one gcd function. Okay,
and inside this will pass the two arguments or two elements. Okay, so inside this for loop, what we can do, we'll simply call the gcd function. Okay, and inside this gcd function, we'll simply find the greatest common divisor. Okay, so array of I. Okay, so by using this, we can calculate the GCD. Okay, so in this GCD function, what we can do, we have to check that if this second element, if b is equals to 0, then we'll simply return a. Okay, and in else, or if this is not true, simply we can return the GCD by calling this function itself by using recursion. Okay, so we'll return GCD of b comma a modulus b. Okay, so by using this, you can find the greatest common divisor. Okay, so here we have find the GCD. We call the GCD function. Okay, after that, simply we have to print answer, so we'll get the output. Okay, so but here to print this, you have to use abs function, math abs function, math.abs, to print the required output. Okay, so you can use any one of this to solve this problem. Okay, so this is the first approach. Okay, so in second approach, what we can do, simply without using, we don't use the math.abs function to solve this problem. Okay, in the second approach. Okay, so the second approach is, okay, first we'll take the input. Okay, that is okay, we'll take one number as input. Okay, after that we'll create one array, let's suppose a. Okay, and we'll give this array size is n plus 1. Okay, after that we'll write the one for loop. Okay, so for loop, that is I equals to 0, I is less than equals to n, and I plus plus. Okay, we'll write this for loop, and inside this for loop we'll take the array element from the user. Okay, after that what we can do, we'll sort this array by using arrays dot sort method. Okay, so we'll sort the array. Okay, after sorting the array, let's suppose we'll declare any variable. Let's suppose we'll give the name is answer, and we'll initialize it with 0. Okay, after that we'll write one for loop. Okay, that is starts from 0, it runs till n. Okay, I plus plus. Okay, we have written this for loop. Okay, inside this for loop, what we can do, we have to check that if this I, if I is 0, then we have to write
answer equals to, we'll simply write array of I plus 1 minus array of I. Okay, we'll simply minus the array of I element from the I plus 1 element. Okay, okay, and in else condition or else part, simply we have to what we can do, here as well we have to create one GCD function. Okay, in this problem as well we have to use the GCD concept. Okay, but we are not using the math.abs function in this approach. Okay, so in GCD function, what we can do, in GCD function, simply we have to write like let's suppose result में हम क्या करेंगे, a मॉडुलस b. ओके, ये निकालेंगे और after that what we can do, we'll simply swap the values. Okay, so we'll write a equals to b, then we'll write b equals to res. Okay, so we'll simply swap the values and we'll return we are going to, here we'll return a. Okay, so in answer, in else part of this for loop, we are going to call the this GCD function. Okay, and we are find the GCD, greatest common divisor, inside this function. So for that we'll write answer, that is array of I plus 1 minus array of I. Okay, in between this between these two values we are going to find the greatest common divisor. Okay, so and after that we'll directly print the answer. Okay, so we'll get the output for this problem. Okay, so let's try to write the code for this problem. Okay, okay, so first here I'll write the scanner class to take the input from the user. So I'll write scanner sc equals to new scanner system dot in. Okay, after that in input we have to take the two integers. Okay, that is n and x. Okay, so we'll take the two integers, integer n equals to sc dot next int. After that integer x equals to sc dot next int. ओके, दो नंबर हमने यूजर से इनपुट ले लिया. अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, n different integers नेक्स्ट लाइन में, दैट इज c0 अप टू cn. दैट मींस एक एरे हमको यूजर से लेना पड़ेगा इनपुट. सो विल राइट इंटीजर एरे, ओके, इक्वल्स टू न्यू integer, and inside this we'll pass the size for this array. Okay, now we have to write the for loop to take this element from as an input from the user. Okay, so I'll write the for loop, then integer I equals to 0,
then I is less than n I plus plus. Okay, so inside this for loop, what I can do, I'll directly minus this x, that is we have to minus this x from this array elements, that is c0 c1 up to cn. Okay, so for that what I can do, I'll write array of I equals to sc dot next int. ओके, ये हमने array के जो नंबर्स है array के वो यूजर से इनपुट ले लिया. अभी क्या करेंगे, इसमें से x को माइनस कर देंगे. ओके, सो ओके x को हमने माइनस किया array में से. ओके, नाउ what we can do, oh, let's create one variable. Let's suppose we'll create answer and we'll initialize it with 0. Okay, after that what I can do, I'll write one for loop. Okay, before that what we can do, we have to create one function to find or calculate the greatest common divisor. Okay, so to calculate the GCD, we'll create here one function, that is public static integer. We'll give the name greatest common divisor. Okay, so and inside this we'll pass the two arguments. Let's suppose integer a and integer b. Okay, so we have passed this two arguments inside this function. Okay, now what we can do here, we'll write one condition, that is if b is 0. So if b is 0, then what we can do, we'll simply return a को रिटर्न कर देंगे. अगर b 0 रहा तो सिंपली a को रिटर्न कर देंगे, नहीं तो हम रिटर्न करेंगे GCD को. ओके, सो रिकर्जन यूज कर रहे हैं हम ये फंक्शन को सॉल्व करने के लिए. सो GCD को कॉल करेंगे और इसमें GCD कैलकुलेट करेंगे. वो कैसे करेंगे, GCD फंक्शन, उसके बाद b को पास करेंगे और a मॉडुलस b. Okay, so by using this we can find the greatest common divisor. Okay, now here, okay, so here we'll write one for loop. Okay, I equals to 0, then I is less than n, I plus plus. Okay, after that inside this for loop what I can do, will simply write, okay, okay, so inside this for loop we'll write answer, and answer equals to, we'll call the GCD function which we have created. Okay, and inside this we'll pass this answer and we'll pass array elements. Okay, so this will find the GCD between. Okay, so and after that we'll simply print the answer. Okay, so we'll write system.out.println and we'll pass the answer. Okay, okay, so
Now we have written the code for this problem. Now let's try to run this code. So I'll just copy this input and let's paste it here in input. Okay, so click on run. Let's see whether this approach works or not. Error. Okay, I think we made some mistake here. Okay, here. Okay, now it should work, I think. Let's see. The output should be 2. Okay, okay. Okay, the function name is not GCD. We have written the function name is greatest common divisor. Okay, so here we'll replace with the correct function name, and in below as well we'll remove or replace the function name, that is greatest common divisor. Okay, now let's click on run. Let's see now it works or not. Again error. Okay, a of I, this is array of I. Okay, okay, so click on run. Now it should work. Okay, now let's see. Okay, it shows an -2. Okay, okay, we have to return output is showing in minus, so we have to return here math.abs function, so this will return the positive number. Okay, abs function returns the positive number. Okay, so click on run. Now it should 2. Okay, you can see now the output is 2, which is correct. Okay, now let's try to run this test case. Okay, second one. So I'll just copy this and let's paste it here and let's click on run. Okay, so for this output should be 24. Okay, let's see. Okay, you can see the output is 24, which is correct. Now what we can do, let's try to submit this code and let's see whether all the test cases will pass or not. Okay, so click on submit. Now the test cases are running. Let's see. Okay, you can see that all the test cases has been passed. Okay, okay, so that means this approach and our uh, logic is correct. Okay, now what we can do, let's try to understand, or let's dry run this code. Okay, okay, so अभी इस कोड को हम क्या करते हैं, ड्राई रन करके देखते हैं कि ये कोड एक्चुअली वर्क कैसे हो रहा है. Okay, so let's take one example. Okay, so let's consider this example. Okay, the second test case. Okay, so first here you can see. Okay, so first here you can see, first we have taken the two numbers, that is 3 and 81. Okay, so here we have taken the number 3 and x is 81.
Okay, so now here we have taken one array, and to take this array elements, okay, we have written this for loop. Okay, so inside this for loop we have taken this, ये array के elements हमने यहाँ पे input ले लिए, और इस elements से हम क्या करेंगे, array के elements में से x को माइनस करेंगे हर एक एलिमेंट्स में से। ये तीन एलिमेंट है, तो तीनों में से हम क्या करेंगे, x को माइनस करेंगे। ओके, सो यहाँ पे फॉर लूप चलेगा। फॉर लूप में अभी क्या होगा, i इक्वल्स टू 0। ओके, सो 0th पोजिशन में एंड 0 इज लेस देन n। ओके, सो 0 इज लेस देन n, n की वैल्यू 3 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो इस फॉर लूप के अंदर जाएगा। तो फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, 0th इंडेक्स पे 33 है। ओके, सो 33 यहाँ पे आ जाएगा, और 33 में से माइनस हमको x की वैल्यू माइनस करनी है, सो x की वैल्यू है 81। ओके, सो 33 माइनस 81, इसका आउटपुट आता है -48। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट इसका आउटपुट आ गया -48। ओके, नाउ अभी i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, तो i की वैल्यू होगी 1, अभी होगी 1। ओके, सो फर्स्ट इंडेक्स पे, सो 1 इज लेस देन, n की वैल्यू 3 है, 1 इज लेस देन 3, कंडीशन इज ट्रू। सो फर्स्ट पोजीशन पे है 129। ओके, सो यहाँ पे 129 आएगा, एरे ऑफ 129। ओके, 129 में से हमें अभी 81 माइनस कर देंगे। ओके, सो इसका आउटपुट आता है 4 +48। ओके, नाउ अभी नेक्स्ट i की वैल्यू अगेन इंक्रीमेंट हो जाएगी, i की वैल्यू अभी हो जाएगी 2। ओके, सो 2 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू, तो सेकंड पोजीशन पे है हमारा 57। ओके, सो 57 में से 81 माइनस होगा, 51 में से 81 माइनस होगा, तो आउटपुट आएगा -24। -24 आउटपुट आ जाएगा इसका। ओके, सो यहाँ पे हमको तीन वैल्यूज मिल गई एरे में, -48, 48 एंड -24। ओके, ये 3 वैल्यूज हमको यहाँ पे मिल गई। ओके, ओके, नाउ अभी एरे की वैल्यू, ये तीन एरे में ये तीन एलिमेंट्स है। ओके, अभी नेक्स्ट कोड देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ओके, यहाँ पे अगेन आंसर इक्वल्स टू 0, आंसर को इनिशियलाइज किया है 0 के साथ। ओके, सो यहाँ पे अभी क्या होगा, ये फॉर लूप की कंडीशन चेक होगी, i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n। ओके, 0 इज लेस देन n, n की वैल्यू 3 है, तो कंडीशन ट्रू हो गई, तो इस फॉर लूप के अंदर जाएगा। सो ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ये फंक्शन को कॉल हुआ है। सो ये फंक्शन हमने यहाँ पे ऊपर रिटर्न किया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ओके, सो यहाँ पे क्या दिया है, b इक्वल्स टू 0। ओके, सो अभी b हमारा यहाँ पे देख सकते हैं, ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर में हम क्या क्या पास किया, आंसर, आंसर की वैल्यू है 0। ओके, 0, और i इक्वल्स टू 0, 0th पोजिशन पे यहाँ पे हमारा क्या है, -48 है। ओके, सो 0 एंड -48 पास हो गया। सो ये a हो गया है, a की वैल्यू, और ये b की वैल्यू। ओके, सो यहाँ पे a की वैल्यू 0 -48 हो गया। ओके, सो b इक्वल्स टू 0, सो ये कंडीशन तो ट्रू नहीं होगी, दिस कंडीशन फॉल्स, क्योंकि b 0 नहीं है। सो अभी डायरेक्टली रिटर्न, ये रिटर्न यहाँ पे आ जाएगा, और ये फंक्शन इटसेल्फ कॉल करेगा फंक्शन को, ये फंक्शन को, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर फंक्शन को। ओके, सो इसके अंदर अभी b है अपना -48। ओके, और a मॉडुलस b, दैट इज 0 मॉडुलस -48। सो इसका आउटपुट आ जाएगा -48।
ओके, सो यहाँ पे हमको, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू मिल गई -48। ओके, अगेन अभी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। ओके, सो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू। अगेन इस फंक्शन को कॉल होगा। नाउ आंसर की वैल्यू 0 है। ओके, सो 0 है। और नेक्स्ट अभी फर्स्ट पोजीशन पे हमारा क्या है, अरे में 48 है। ओके, सो 48, 0 एंड 48, ए की वैल्यू हो गई और ये बी की वैल्यू हो गई। ओके, सो ए की वैल्यू अभी यहाँ पे +48 है। ओके, okay, so this is a and this is b। okay, so b equals to 0। अगेन ये कंडीशन फॉल्स हो गई। सो इस ये फंक्शन, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे इट सेल्फ फंक्शन को कॉल किया है, रिकर्जन। ओके, सो यहाँ पे b equals to 48 है और 0 मॉडुलस 48। ओके, सो अगेन यहाँ पे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 48 आ गया इसमें से। ओके, सो 48 प्रिंट हो जाएगा। ओके, नाउ अगेन आई की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगी। ओके, नाउ सो अगेन इस ये फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पे अभी आंसर है 0। थर्ड जो वैल्यू है, ओके, सो फर्स्ट हमको 48 मिल गई, -48। अगेन सेकंड वैल्यू इस फॉर लूप में भी हमको 48 मिल गई और थर्ड जो है वो भी -24 मिल गई हमको वैल्यू। ओके, सो हम सो यहाँ पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। अभी ये इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट किया है आंसर को। ओके, सो आंसर को प्रिंट किया है। सो आंसर की वैल्यू है -24, बट इनसाइड दिस हमने एबीएस फंक्शन कॉल किया है। तो एबीएस फंक्शन क्या करेगा, ये पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है। सो ये -24 को रिटर्न नहीं करेगा, ओनली 24 को रिटर्न करेगा। ओके, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट लास्ट में 24 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट 48 -48 वैल्यू मिल गई हमको। सेकेंड इसमें 48 मिल गई और लास्ट में हमको -24 वैल्यू मिल गई, इसलिए ये -4 एंड में यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ओके, सो दिस लाइक दिस कोड वर्क्स। ओके, okay, so this is the approach to solve this problem। जो दूसरा अप्रोच है उसको भी डिस्कस करते हैं हम। ओके, सो what I can do, I'll just comment out this part। okay, that is for a function which we have created। so I'll comment out this, and then again this part I'll comment out। ओके, सो यहाँ पे हमने स्कैनर क्लास ले लिया। नेक्स्ट 2 नंबर हमने यूजर से इनपुट भी ले लिए, n and x। ओके, नाउ व्हाट आई कैन डू, आई जस्ट we have to create uh, we have to create function to calculate the GCD। okay, so I'll write public static int। okay, and I will give the name short in GCD, I'll give the name as GCD। okay, so and inside this I'll pass the two arguments, that is integer a and integer b। okay, so inside this how we can find the GCD, like simply directly I'll return and in here I'll write a modulus b equals to 0। okay, I'll write the ternary operator or conditional operator here। okay, so if that is written a modulus b equals to 0, then simply b colon GCD of a मॉडुलस b। अगर a मॉडुलस b इक्वल्स टू 0 है तो सिंपली b को रिटर्न कर देंगे।
नहीं तो जीसीडी फाइंड करेंगे, दैट इज बी कॉमा ए मॉडुलस बी। ओके, सो यहाँ पे हमने ये जीसीडी कैलकुलेट करने के लिए फंक्शन रिटर्न कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, मेन में हम लेट सपोज विल declare one variable, that is let's suppose answer, and we'll assign it with -1. Okay, after that what I can do, I'll write one for loop for integer I equals to 0, I is less than equals to n, then I plus plus. Okay, after that inside this for loop what I can do, I'll write one variable, let's suppose कोई भी ये वेरिएबल को हम कोई भी नाम दे सकते हैं। सो लेट्स सपोज हम इसको y नाम देते हैं। ओके, और इसमें हम क्या करेंगे, अरे के एलिमेंट्स को स्टोर कर देंगे। सो आई विल राइट sc डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, सो इस वेरिएबल में क्या होगा, अरे के एलिमेंट्स स्टोर हो जाएंगे। ओके, ओके, आफ्टर दैट here we'll write one condition, that is if अगर जो आंसर है आंसर -1 रहता है तो हम क्या करेंगे, if answer equals to -1 then simply we'll write answer equals to math dot abs and हम array के एलिमेंट्स में से x को माइनस कर देंगे, दैट मीन्स y में से x को माइनस कर देंगे। ओके, ओके, एंड this if this condition is not true then else statement में हम लिखेंगे आंसर इक्वल्स टू, इसमें हम क्या करेंगे, जीसीडी जो हमने फंक्शन क्रिएट किया उसको कॉल कर देंगे। ओके, जीसीडी को कॉल कर देंगे और इसमें हम पास करेंगे आंसर, आंसर, और इसमें हम क्या करेंगे, मैथ डॉट एबीएस और y माइनस एक्स को इसमें पास कर देंगे। ओके, एंड y को हम इनिशियलाइज कर देंगे x से, y इक्वल्स टू x लिख देंगे। ओके, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ओके, और हम प्रिंट कर देंगे आंसर को। ओके, नाउ दिस इज द this is approach. Okay, this is another approach. Okay, so इनपुट कॉपी करेंगे यहाँ से। ओके, यहाँ पे इनपुट में पेस्ट कर देंगे। ओके, नाउ let's click on run and let's see whether this code also works or not. Okay, okay, here it prints. Okay, so we have to print this outside the for loop. Okay, so I'll just remove the statement from here and I'll paste it here. Okay, now okay, static in gcd integer a integer b return a modulus b equals to 0, then we have to return b, else gcd of b comma a modulus b. Okay, then scanner class integer n integer x, two numbers, then here we'll declare answer equals to -1 for I equals to 0, then I is less than. Okay,
Okay, so here uh, we don't need to write here equals to. We can simply write I is less than n. Okay, so and now it works. Okay, so uh, I'll just submit this code and let's see whether all the test cases will pass or not in this approach as well. Okay, you can see that in this approach as well all the test cases has been passed. Okay, so दैट्स इट इन दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. एंड जो सेकंड अप्रोच है वो आप ट्राई कर सकते हो विदाउट यूजिंग द ABS function. Okay, which we have discussed already. You can try this second approach. Okay.